So break even, what is the break even analysis? Where you are going to decide your level of output. Level of output means it is nothing but your total production. Getting this? So to bear a minimum cost, or to bear whatever is the cost of your industry, how many units I need to produce. Getting this? Means what? Which is your point at which you are neither in profit nor in loss. And to recover the loss, minimum, to recover the minimum cost, how much units I need to produce, and what is the point from which my profit area will start. So we have seen, in case of any manufacturing activity, or in case of any kind of activity, it requires two types of cost. One is fixed cost and second is variable cost. Now fixed cost will remain fixed entirely for a entire production or for throughout the year. But variable cost is the cost which will vary with your level of activity, which will vary with your level of production, which will vary with your level of resources. So if we calculate the total cost, so total cost is equal to your fixed cost plus variable cost. So fixed cost will remain as it is throughout the year or throughout your production, whereas variable cost will change per unit. So if we calculate the total cost at that time, total cost is the sum of your fixed cost and variable cost. Okay. So whenever you are going to do the expenditure at that time on the manufacturing goods and services, on the basis of your level of activity, your revenue will change. If I produce 2 units at that time, my revenue will be less. But at that time, my cost will be higher. Why? Because proportion of fixed cost is more. Just look at here. If I produce 0 units at that time, my variable cost will be 0, but I have certain amount of fixed cost. So at 0 unit, my revenue will be 0. If I produce 2 units at that time, here in the same proportion, my fixed cost will remain fixed, but my variable cost will change. So at that time, my revenue will be less than total cost. If I produce 3 units at that time, my revenue will go here, and at that time, my fixed cost will be there. So here also my fixed cost is more than my total revenue. Then as we increase the number of units, then what will happen? Your variable cost increases, your fixed cost will remain same. So accordingly, your total cost will increases. But if you produce more and more units, at that time what will happen? Your revenue will increase, go on increase day by day. Getting this? So if you add another some units at that time, when you reach at the break even point, at that time what will happen? Your total cost curve and total revenue curve will cross with each other. The point at which means what? Your revenue is increasing by increasing the level of output, and your cost is also increasing. But what is going to happen? The way in which, or the amount in which your revenue is increasing in the same amount or in the same proportion, your total cost is not increasing. Getting this? That's why they will intersect with each other. They are not going parallel. Because for example, your revenue is increasing by 20%, but your cost is increasing by 5%. That's why what will happen? The proportion of trend in increase is not same. That's why they will intersect with each other. And the point at which they are intersecting with each other, that point is called as a break even point. Break even point means what? Below that break even point, you will be in a loss, and above that break even point, you will be in a profit. So as an organization, I need to decide my break even point, and accordingly I need to adjust my production level. Getting this? अगर मुझे बिजनेस में सर्वाइव होना है, इसका मतलब मेरा प्रोडक्शन ब्रेक इवन पॉइंट से भी ज्यादा होना चाहिए. बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट जो पॉइंट होता है, यहाँ पे मेरा रेवेन्यू और मेरे कॉस्ट इक्वल होते हैं. Getting this? Means what? I am neither in profit nor in loss. For example, your break even points, number of units will be 50. तो मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए तो 50 में मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा. प्रॉफिट 50 यूनिट्स अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे क्या रिकवर करूंगा?
I will only recover my total cost. If I want to generate the profit at that time, my production capacity will be more than 50. तो मुझे 51th बनाना पड़ेगा, 52nd, 53rd, 53rd, 54th, 55th. यानी मेरा प्रोडक्शन लेवल 50 से आगे ही होना चाहिए. Then and then I will generate the profit. So this is the break-even point which will help you to decide your level of revenue. Then it will also help us to understand the proportion of variable cost in the total cost, and it will also help us to understand what is your fixed cost. So as per company's objectives of the profit, कितना profit कमाना है, कितना market area capture करना है, accordingly you will decide your profit level with respect to break even. एक बार मुझे break even point पता है तो उसके आगे वाला सारा मेरा profit है और नीचे वाला क्या है, मेरा loss है. To survive in this competition, I should be more than my level of output should be more than break even point. Getting this? So 1 minute. So here, so this area will be called as a loss area and this area will be called as a profit area. And ये जो एरिया है उसको MOS भी बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी आप अगर मेरा प्रोडक्शन इधर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 है, so I will be in safety position. If my position is there, that time also I will be in safety position. अगर यहाँ पे भी है ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर तभी भी मैं सेफ हूँ. लेकिन मेरा प्रोडक्शन अगर यहाँ पे जाता है, फॉर एग्जांपल 30, मीन्स व्हाट, आई विल बी, अगर मेरा प्रोडक्शन इधर आया इसका मतलब क्या है, आई एम सफरिंग द लॉस. तो अगर मुझे लॉस सफर नहीं करना है तो मुझे इधर किसी भी हालत में मुझे इधर आना पड़ेगा. दैट इज समथिंग अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट. इधर मैं आया इसी पॉइंट को, इसका मतलब क्या है, मेरा प्रॉफिट और मेरा रेवेन्यू और मेरी कॉस्ट टोटल इक्वल है. मीन्स व्हाट, आई एम नॉट सफरिंग लॉस. अगर उसके लेवल के नीचे मैं जाता हूं तो इसका मतलब आई एम सफरिंग लॉस एंड इट विल bring me in danger position. So anyhow, to survive in this competition, my production will be more than this. My production break even point के आगे किसी भी हालत में होना चाहिए. So that what will happen, your revenue minus your total cost will be your profit. ये मेरा profit रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इतना कमाता हूँ, अगर मेरा इधर इतना कमाता हूँ तो इसका मतलब क्या है, उसमें से इतनी मेरी कॉस्ट जाएगी और ये बचा हुआ मेरा प्रॉफिट रहेगा. ये बचा हुआ मेरा प्रॉफिट रहेगा. That's why I need to decide at the time of deciding your revenue and at the time of finding out your total cost, you need to find out the break even point. Okay, clear everybody? Please tell me. In the last lecture also we had discussed about this. Clear everybody? Break even point क्या है? Just tell me. Did you understand break even point? Yes, sir. Okay, so whatever explanation I have given, the same explanation I have shown here slide. There is no need to go through again. Just see how to find out the break even point. So to find out the break even point, that is my level of activity. Break even units is equal to fixed cost upon selling price per unit divided by minus variable cost per unit. तो उसको बोलते हैं fixed cost upon PV ratio. So to find out this break-even point, I will find this break-even point by using the formula fixed cost divided by PV ratio. Okay, and how you are going to find out the PV ratio? PV ratio is equal to contribution upon sales into 100. So contribution means what? Fixed cost plus profit, or sales minus variable cost is your contribution. So by finding this, I will find out the break-even quantity, and I will be always more than my break-even point to generate the profit. So that we had seen in the last lecture. ये break-even point किस लिए use करता है? Maximum profit level decide करने के लिए, unused capacity decide करने के लिए, impact of profit on your revenue, that as well as changes in the profit. If product is change, अगर production level change करते हैं तो हमारा profit level कैसे vary होता है,
as well as if you're suffering from any kind of losses, whether I should continue with my production or I should have to close down my production. To take this kind of decision, I need to use the break even analysis. तो पहला चीज है कि अनयूज्ड कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए, प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन डिसाइड करने के लिए, कितना प्रॉफिट कमाना है वो डिसाइड करने के लिए, और हाउ profit and sales are varying. What is the proportion of profit with respect to your total revenue, as well as what is the behavior of your fixed cost and variable cost. To understand this, I need to go for break-even analysis. Okay. Now next one is the profit forecasting. Forecasting यानी it is kind of estimation. Estimation कब होता है? Future के लिए होता है, past के लिए नहीं होता है. So profit forecasting means what? Here I am estimation. I am doing the estimation, or I am projecting of the profit. I'm just making the estimation about my future profit. अगर इसी साल में इतना profit है तो अगले साल में कितना profit होना चाहिए. Getting this? So if I'm doing this, that time it is called as a profit forecasting. So being an organization, I need to estimate my I need to forecast my profit, because on the basis of this profit, you will decide your objective. What is your objective? And to achieve these objectives or to achieve these goals, how much profit I need to generate. Getting this? So it is as a manufacturer, as an entrepreneur, you need to project your future profit, because with respect to your future projection of your profit, you will decide your amount of expenses. So by generating this and this much of expenses, I will purchase the machinery. Getting this? So here you are going to decide, or you are going to project your sources of income. You are going to decide your sources of income, and with the help of these sources of income, you will decide what kind of expenses you will do there. That's why profit projecting or profit forecasting or profit estimation is one of the important points. Because on the basis of profit estimation कैसे करोगे? To do the profit estimation, I need to estimate about my sales. I need to estimate about my revenues. To make the revenue expenses, you need to decide your level of output. कितना manufacturing होगा, कितने amount sell करोगे, उसमें per unit selling price कितनी रहेगी, उसमें total selling price में से cost निकलने के बाद मेरा profit कितना हो जाएगा. Means what? Entire things are about estimation. So any organization has to estimate the profit, because by generating the profit, you will have to do the certain type of investment, or you will decide certain type of your expenses. So here profit forecasting means what? It is the projection of future earning after considering all factors affecting on the size of business, then your profit, such as firms pricing policies, costing policies, depreciation policies, and so on. So whenever you will be deciding the profit projection, at that time, what will be your pricing policies, whether they are stable or whether they are fluctuating. So on the basis of this, you will decide your you will calculate your forecast. Means what? Whether your prices are going ups and down, at that time profit estimation will also show the fluctuations. Whether your costing policies or the expenses policies are not stable, accordingly your profit proportion may vary. Whether governments or whether your depreciation policies, depreciation means what? It is the renewal, it is the real and wear and tear value of your product, your assets. Getting this? So if the depreciation policies are changing, if your costing techniques or tax policies are also changing, if your product pricing policies are also changing, at that time your profit forecasting will also shows the variations. Getting this? So proper estimation of both economic as well as non-economic variables. Economic variables means what? Which we will count in terms of money. Non-economic variables means what? These are the variables, these are the some of the indications, so these are some of the variables which will affect on your business, but these are non-economic.
which we will count, don't count in terms of money. So whenever we will do the proper estimation of economic as well as non-economic variables, may be necessary to for the firm to project the sale volume or cost or to decide your level of profit. So whenever you are going to estimate the profit level at that time, first I need to decide what are my pricing policies, whether these are stable or whether these are fluctuating. Then I need to study my cost policies. What type of cost yeah, I will have to incur, and what is the proportion of variable cost, what is the proportion of fixed cost, and what is their trend, कैसे बढ़ रहे हैं. And next one is the depreciation policies. Along with this pricing policies, costing policies, and depreciation policies, here I need to understand the economic and non-economic variables which affect on my pricing policies. So by understanding this, I will estimate the profit of next year, profit of next year, profit of next 5 years, profit of next 5 6 years. So this is something about estimation. So whenever you are going to do the estimation or the projection of the profit at that time, one is spot projection. अभी spot projection क्या है देखिए. Here we will be preparing profit and loss statement. Projected profit and loss statement. It is your estimated profit and loss statement. So to make the estimated profit and loss statement, I should have present year's data. On the basis of present years, or on the basis of past years data, you can estimate about the future. कोई भी अगर मुझे फ्यूचर एस्टिमेशन करना है, प्रॉफिट का एस्टिमेशन करना है, रेवेन्यू का एस्टिमेशन करना है, कॉस्ट का एस्टिमेशन करना है, at that time what I should be there, I should have certain foundations, and these foundations are your present status of expenses, present status of your revenues, present status of your profits, और पास्ट स्टेटस. या आज की अगर मुझे स्टेटस पता है तो कल का स्टेटस में फाइंड आउट करूँ. कल का परसों का अगर प्रीवियस ईयर का स्टेटस पता है तो नेक्स्ट ईयर का मैं स्टेटस पता जनरेट करूँ. मीन्स व्हाट, दिस इज समथिंग अबाउट spot projection. In spot projection, what we will be doing, we will be generating profit and loss account, profit and loss statement of our organization for a specified period. अगले 2022 का प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2024 का, 2025 का, 2026 का, 2030 का हम लोग बना सकते हैं. Means what, we can estimate the P&L account of next 5 years or next 2 years or next 3 years. Getting this, where your base or references will be a data of current year or data of previous year. On the basis of this, you will charge or you will apply annual increases of 5%, 10%, and you will prepare the projected financial statement. So this projected financial statement will show the future picture or the future of your organization or future picture of your organization after certain years of the time. So on the basis of that, what we will do, this forecast. So whenever you will do the forecast, at that time this forecast will decide, or forecast will help us to made about the sale volume. हम लोग आज का इतना सेल है तो अगले साल कितना सेल हो सकता है, आज का इतना सेल होता है तो 2022 में कितना सेल हो सकता है. I can make the projection. Projection is nothing but estimation, future, finding the future output. Then we can do the prices. What, अगर आज इतनी टोटल सेलिंग प्राइस है तो कल कितनी हो सकती है, अगले साल में कितनी हो सकती है, अगले के अगले साल में कितनी हो सकती है. That is something about projection. Means what, this is about estimation. So we will do the estimation about our sales, estimation about our output, estimation about our prices, estimation about the cost of your goods and services, and estimation about our sales. So whenever we will prepare the profit and loss account of next year, and where
With respect to this profit and loss account, I will estimate my sales, product, price, cost, and your expected sales. So that is something about spot projection. So here, to use the spot projection, I have to do two types of analysis. First one is the break-even analysis. So break-even analysis, which we have already studied, in which you will be finding out the relationship between your revenue and total cost and your output. ब्रेक इवन एनालिसिस क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन योर रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड आउटपुट, ये तीनों का जो जहां पे रिलेशन दिखाता है उसे एनालिसिस को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन एनालिसिस. इट विल हेल्प अस टू डिसाइड द रेवेन्यू लेवल, it will help us to understand the cost of the product, and it will help us to decide the level of activity. So that is your total production. Keeping in this consideration the way in which output is related to the profit, तो यहाँ पे profit और output का relation हम लोग generate कर सकते हैं. And to for the spot projection, break even analysis is one of the important things. By doing the break even analysis, I can estimate my revenue, I can estimate my cost, and I can find out the relationship between revenue, cost, and total output. The second analysis which I have to do in while doing the spot projection, that is the environmental analysis. So in environmental analysis, what we will be doing, it helps in relating to company's profit to the key variables. Key variables means what? These are the macroeconomic parameters and microeconomic variables which will affect on my profit. Microeconomic parameters means what? For example, changes in the inventories, changes in the labor, changes in the machineries, changes in the purchasing cost, changes in the advertisement. So these are the microeconomic parameters or variables due to which my profit will change. And macroeconomics, for example, means what? For example, interest rate changed by the RBI, then political environment of the country, then your legal environment of your country, as well as a fiscal policies of your country, as well as changes in the tax structure, due to which my profit of my organization can also increase. So here, to understand the internal analysis of your organization, you have break-even point, and to understand the external analysis of your organization, you have to go through the environmental analysis. By doing the environmental analysis, you will understand what are the parameters which affect internal parameters of your business and external variables of your business which affect on my profitability level. So spot projection यानी क्या है? On this spot, you can make the projection of your future statement. That is P&L account, and where you can use break-even analysis and environmental analysis. Getting this clear, everybody? Spot projection यानी क्या है? This is about estimation of future profit and loss account. Estimation of your future profit and loss account, because profit and loss account consists of all your revenue आता है, cost आती है, output आता है, so many things we will have to consider when we go to prepare projected financial state. Projected यानी it is not accurate, it is estimation. It may be correct, it may not be correct, but it will give you some guidelines, some clues about your profit, some clues about your your total cost, some clues about your sales volume. So that's why every organization need to prepare the projected profit and loss account. So we will understand what is my projected profit, what is my projected cost, and accordingly I will manage my resources. To do this projection, I need to go through the break-even analysis, where I can understand the relationship between revenue, total cost, profit, and your output. That I can understand through break-even point. And along with this break-even point, I have to go through the environmental analysis, in which I can understand the impact of parameters, internal parameters or internal variables and external variables, due to which my sale volume, my profitability level, my cost will increase or decrease. So microeconomic parameters and macroeconomic parameters we have to study
we have to analyze impact, because my profitability level, my sale level, my output level will change due to the microeconomic parameters as well as macroeconomic parameters. Clear everybody? Spot projection, tell me fast. Yes, sir. Okay, now next one is the price control. अभी देखिए कंट्रोल यानी क्या है, I will have some control or some limitations to increase the price. Price control यानी we are keeping our price within a limit. We are applying limit. We are applying limit. We are applying restrictions. Okay. So you can also have certain amount of price control examples. Do you know any of the example where government has controlled the prices or where government apply the prices? For example, I'll give the example. If I produce vegetable and if I sell this vegetable into the market, is there any government restrictions कि price की उसकी prices इतने ही होनी चाहिए? या if I'm produce this textiles, तो textile में अगर मैंने कुछ भी, how I'm going to decide the price? तो मेरा profit level, मेरा cost और मेरा profit level decide करके मैं क्या करूंगा? Selling price decide करूंगा. Getting this? So where there is no control on my price, whatever the price I will, whatever the profit I will wanted to enjoy, I will decide the price, selling price. But there are certain products in the market, there are certain products in the our economy where we need to keep some restrictions. इसके prices इतने ही होने चाहिए. Can anybody give me the examples of such goods or such a commodity where there are controls on the prices? Yes. Can anybody give me example कि जहाँ के जिसके ऊपर, जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिस कमोडिटी के ऊपर कुछ कंट्रोल है, उससे ज्यादा हम लोग उसकी प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं? यस, कौन से प्रोडक्ट है मार्केट में? हम लोग डेली यूज में, हमारे घर में भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है. मैन्युफैक्चर, पेट्रोलियम एंड सिलेंडर, गैस सिलेंडर. yes, exactly. Who is speaking? सुवर्णा. Yes, Suvarna. So let us take an example of this gas. तो गैस के प्राइसेस क्या होते हैं? देयर इज द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट कि उसके 800 या 900 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. So those manufacturer are there, they will keep the control, trying to this. So they will keep a control. For example, sugar के prices 35 rupees per kg, 40 rupees per kg, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. Getting this? So I can't charge more price on the consumers. So where I have to apply the control. Getting this? So there are some of the commodities, some of the services where I can't charge more prices. If I try to charge more prices, at that time what will happen? It will disturb my entire economy. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, गैस है, गैस के सिलेंडर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है? रेस्ट्रिक्शंस डालता है. Getting this? So you will be producing certain kind of goods and services where price control policies will be applicable. हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके ऊपर गवर्नमेंट का ऑलरेडी कंट्रोल है. तो एट दैट टाइम यू विल फेस द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्रॉफिट. हम लोग मन चाहे प्रॉफिट नहीं कमा सकते. Getting this? So price control क्या है? Price controls are the restrictions imposed by the government to ensure that goods and services remain affordable. Oil के prices, उसके बाद जो basic commodity होते हैं ना, sugar रहेगा, oil रहेगा, उसके बाद गैस रहेगा, उसके बाद और क्या क्या चीजें होती है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट इज imposing some of the rules and regulations. गवर्नमेंट विल डिसाइड द बेस्ट प्राइस, उसके आगे नहीं जाना है, उधर तक ही सेल आउट करना है. लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क. ओके, तो मिल्क के जो प्राइसेस है ना, बेसिक जो नीड लगती है, तो बेसिक जो फूड्स, बेसिक जो गुड्स लगते हैं, उसके ऊपर क्या होता है? प्राइस कंट्रोल होता है. लग्जरियस गुड्स, फॉर एग्जांपल कार, फॉर एग्जांपल मूवी, सिनेमास,
For example, any kind of luxury items, whenever you will purchase, at that time these price controls are not applicable. Price controls are only applicable in case of basic goods. जो नेसेसिटी नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल होता है। और ये प्राइस कंट्रोल कौन डालता है? अगर मैं उसी टाइप का प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, एट दैट टाइम प्राइस कंट्रोल इज आल्सो एप्लीकेबल टू मी। अगर मैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, गैस का कुछ सप्लाई करता हूँ, गैस का कुछ इसे सर्विसेज देता हूँ, तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शंस वो मेरे भी ऊपर आने वाले। Getting this? So if I am producing luxurious items, for example cars, for example any consumables which comes under, for example perfumes, for example those shampoos or any textile material, at that time price restrictions will be not there. Price restrictions किसके ऊपर आते हैं? बेसिक प्रोडक्ट जब हम लोग बनाते हैं वहां पे प्राइस रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, और उसी रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस कंट्रोल बोलते हैं। और प्राइस कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ओके, प्राइस कंट्रोल क्यों करता है? बिकॉज द कंज्यूमर शुड अफोर्ड द प्रोडक्ट एंड कमोडिटी। कंज्यूमर को अफोर्ड होने चाहिए एज पर हिज इनकम। उसका इनकम कितना है, उससे नीचे प्राइसेस होने चाहिए। अगर प्राइस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा तो कंज्यूमर का इनकम रहेगा 50 रुपीज। गेटिंग दिस? एंड उसका प्राइस रहेगी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट व्हिच ही इज buying, its price will be more than 50. That time it will be not affordable to consumer. Getting this? So to make product affordable to consumer should buy the product. Otherwise what will happen? There will be no circulation of economy circulate नहीं होगी, prices circulate नहीं होगा। Getting this? इसलिए मुझे एज अ गवर्नमेंट मुझे रेस्ट्रिक्शंस डालने पड़ते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस हम लोग डालते हैं उसको बोलते हैं प्राइस कंट्रोल। और वही प्राइस कंट्रोल कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ही रहते हैं, सारे प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रहते। They are also used to create the fair market that is accessible to all. जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सबको परवड़ना चाहिए, सबको अफोर्ड होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? We will decide the best price. Getting this? By deciding the base price, this product will be purchased by any of the consumer, जिसका इकोनॉमी लेवल ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन सबको अफोर्डेबल होना चाहिए। The point of price control is to help control on the inflation. Means what? Manufacturer or seller will not decide its price. Seller will not exploit to the consumer. उसको मन चाहिए प्राइस डिसाइड नहीं करेगा। So if I am a manufacturer of certain goods and services, my price, government will give me this price range or price limit. उसके अंदर ही मुझे क्या करना है? प्राइस कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने परसेंट में हो रही होना है। एफडी के रेट्स कंट्रोल किए हैं, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल किए हैं। गेटिंग दिस? So in the same manner here also I have to decide the legal minimum prices and maximum prices. कम से कम कितना प्राइस लेना है और ज्यादा से ज्यादा कितना प्राइस डिसाइड करना है। That is something about price control. And price control are normally mandated by the government in the free market. Free market means government intervention करके, government restriction डाल के प्राइस कंट्रोल करता है। They are usually implemented as a means of direct economic intervention. Intervention यानी restriction डालना और in picture आना. And by making the intervention, you will decide the affordable price of the product, which will be affordable to common public, because the product comes under basic category product. That time this product should be affordable to all the person. For example, let us take an example of milk. Milk तो अमीर भी लेता है, गरीब भी लेता है। Getting this? So we will, as a government, we will have to decide the price of this milk कि जो गरीब को भी परवड़ना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट विल डिसाइड कि अगर मैन्युफैक्चरर, दूध मैन्युफैक्चरर कोई भी रहेगा तो उसको उसके दूध की कीमत कितनी रखनी है। इट विल बी इन बिटवीन 55 to 60 पर लीटर, उसके आगे उसने नहीं जाना है। If any manufacturer is
charging more than 60 rupees, at that time government can take the legal action against this manufacturer. Okay, the price control can often lead to disruptions in the market, losses to the producers and noticeable changes in the quality. अगर हम लोग प्राइसेस में कंट्रोल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इन सर्टन केसेस मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 60 रुपीज है और हम लोग एज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को बोल रहे हैं कि यही प्रोडक्ट 60 में ही सेल आउट करना। 60 रुपीज तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट मे हैपन। क्यों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है? ड्यू टू इंक्रीजिंग द रॉ मटेरियल कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीजिंग द इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माय प्रॉफिट प्रोपोर्शन विल रिड्यूसेस। इसलिए मुझे क्या करना है, सम ऑफ द टाइम्स ड्यू टू द प्राइस इंटरवेंशन, ड्यू टू द प्राइस कंट्रोल, मैन्युफैक्चरर्स और द प्रोड्यूसर विल आल्सो सफर द लॉस। गेटिंग दिस? तो लॉस अगर प्रोड्यूस करता है, जनरेट होता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक एडजस्टमेंट विद द क्वालिटी। अगर कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा, प्राइस कंट्रोल अगर रहेगा, तो एट दैट टाइम टू जनरेट द प्रॉफिट, टू रिड्यूस द कॉस्ट, आई विल एडजस्ट विथ माय क्वालिटी। मैं क्या करूंगा, क्वालिटी में कुछ एडजस्ट करके गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए प्राइस को मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट सेल आउट करूंगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आई विल सफर द लॉस, क्योंकि मेरा टोटल कॉस्ट ही 60 रुपीज है और गवर्नमेंट बोलता है कि 60 रुपीज से ज्यादा पर लीटर मिल्क के पैसे नहीं लेना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल एडजस्ट विथ क्वालिटी। एडजस्ट विथ क्वालिटी यानी पानी मिक्स करके मैं क्या करूंगा, उसका रिकवरी करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हेनेवर you will be under price control policies, at that time if your total cost is going above than your fair price, at that time I will adjust with quality. as a manufacturer मैं क्या करूंगा, quality में adjustment करूंगा। getting this? so this is about the price control. understanding price control क्या है, applying restrictions on the final product, that is something about price control. तो price control अगर होता है तो उसमें minimum price and maximum price will be decided by the government, and you have to sell your product in between this range. getting this? and whenever you will be doing the price controls, at that time some of the times manufacturer will suffer the loss. cost जितना है उतना ही profit आ रहा है, और you will have to survive. To survive under this price control products, I need to adjust with quality. Clear everybody? Just tell me control क्या है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Clear. Now next one is the price support. अभी हम लोगों ने देखा कि फॉर एग्जांपल मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी प्राइस सपोर्ट होता है। प्राइस सपोर्ट होता है यानी इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट विल गिव द सब्सिडीज टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरर। मुझे पता है कि मैन्युफैक्चरर, मैंने प्राइस कंट्रोल अप्लाई करने से क्या हुआ है, अभी मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना वो एक्सपेक्ट करता है। एट दैट टाइम आई विल सपोर्ट द प्राइस। एज अ गवर्नमेंट मैं उनको सब्सिडी दे दूंगा, जैसे कि मिल्क के ऊपर होता है। प्राइस सपोर्ट क्या करता है, इसमें गवर्नमेंट विल परचेज द प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस। अगर मान लो इफ द प्रोड्यूसर, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मिल्क, अगर मिल्क हम लोग कॉमन पीपल को 60 रुपीज को अगर परचेस करने के लिए बोलते हैं, 60 रुपीज को सेल आउट करने के लिए बोलते हैं, गेटिंग दिस? एट दैट टाइम मिल्क प्रोड्यूसर विल सफर द लॉस, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को बेचने के बाद जितना भी लॉस होता है, वही लॉस क्या करेंगे, हम लोग नुकसान भरपाई देंगे, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, और we will prepare such policies which will support to the price level. Getting this? In this case what will happen, अगर कॉमन आदमी 60 रुपीज को प्रोडक्ट परचेस करता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, 70 रुपीज को परचेस करेगा वही प्रोडक्ट, 70 रुपीज को मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा, और 60 रुपीज को फिर किसको, कंज्यूमर को सेल आउट करेगा। मीन्स व्हाट, देयर इज द लॉस इज रिकवरिंग
लॉस इज सफरिंग बाय द गवर्नमेंट नॉट बाय द मैन्युफैक्चरर। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ यू नो जो गैस होते हैं, तो गैस के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है, किस लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। वी विल नॉट ब्रिंग मैन्युफैक्चरर इनटू द प्रॉब्लम। अगर मैन्युफैक्चरर का ज्यादा लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट हमको गैस के ऊपर, गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी यानी 800 रुपए को लेना मुझे परवड़ने वाला नहीं है, और 700 रुपए को लेना मैन्युफैक्चरर करना या सेल करना गवर्नमेंट को या एजेंसी को अफोर्डेबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, we will sell the product at 800 rupees and we will provide, as a government we will pay subsidies to the user or the consumer। तो 50 रुपए, 60 रुपीज हमको या 100 रुपीज तक सब्सिडी आती है। मीन्स व्हाट, we are supporting to the prices। Getting this? It is the combination of two programs, a minimum price and floor price, or floor price, and government purchase of any of the surplus। तो हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि चलो ठीक है भाई, आप अपना दूध या मिल्क 60 रुपीज पर लीटर के ऊपर नहीं बेचना चाहिए। गेटिंग दिस? तो इसमें किसका घाटा है, अभी मैन्युफैक्चरर का घाटा है, क्योंकि क्या है, कॉस्ट इज कमिंग अराउंड 59 रुपीज। गेटिंग दिस? अभी जितना प्रोडक्शन होगा, जितना भी उसका आउटपुट है, उसमें से कुछ अमाउंट the manufacturer is selling to the market। अभी बचा हुआ जो प्रोडक्शन है, उसका बचा हुआ लेवल ऑफ एक्टिविटी वो क्या करेगा, गवर्नमेंट परचेस करेगा विद हायर प्राइसेस। एंड जितना भी लॉस होता था मैन्युफैक्चरर का कंज्यूमर को परचेस करते समय, वही लॉस रिकवर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा पेइंग बाय द गवर्नमेंट। Thus the price support is different from the price floor, because with the price floor any excess production by the seller is the burden on the sellers। तो इसमें क्या है, फ्लोर प्राइस एंड मिनिमम प्राइस में प्राइसेस से क्या होता है कि एक्सेस प्रोडक्शन अगर आ गया तो एक्सेस प्रोडक्ट सेल करने के लिए एज अ मैन्युफैक्चरर इट विल बी अ बर्डन ऑन द सेलर्स। गेटिंग दिस? अभी ये एक्सेस प्रोडक्शन क्या करेगा, गवर्नमेंट परचेस करेगा एट हायर प्राइसेस, because this is the policy of price support। In contrast with the price support, any excess production is the burden to the government। excess production किया तो गवर्नमेंट को बर्डन रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे से वो परचेस करना पड़ेगा और कम पैसे को फिर मार्केट में सेल आउट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर के प्राइसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल के प्राइसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक प्रोडक्ट्स के प्राइसेस, जैसे कि शुगर के प्राइसेस, देन मिल्क के प्राइसेस। देयर आर आल्सो प्राइस सपोर्ट फॉर द मिल्क एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगर फार्मर को बचाना है, फार्मर का फायदा होना चाहिए, तो मैंने क्या करना चाहिए, एज अ आई शुड हैव टू डिसाइड द प्राइस सपोर्ट, आई हैव टू सेट द प्राइस सपोर्ट, वेयर एज अ गवर्नमेंट आई विल परचेस एट अ हायर प्राइस and I will sell at to the lower price to the consumers। तो इसको बोलते हैं, शुगर के ऊपर प्राइस सपोर्ट होता है, मिल्क के ऊपर होता है, गैस सिलेंडर के ऊपर प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज होती है। दिस इज अबाउट प्राइस सपोर्ट। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस कंट्रोल एंड प्राइस सपोर्ट? प्राइस कंट्रोल के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वी विल अप्लाइंग द रेस्ट्रिक्शंस कि इतने में ही सेल आउट करना है, वेयर आई एम नॉट सपोर्टिंग। So here there are some of the goods like agricultural foods where government apply the subsidies, government give the subsidies or government give the support to the decide the price। प्राइस डिसाइड करते समय गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं प्राइस सपोर्ट, और इट इज मेजरली ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ओनली। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग प्राइस सपोर्ट करते हैं। Now the government posts minimum price it is willing to pay for the product called as support price। minimum price which it is willing to pay, कितना कैपेसिटी कितना है, कंज्यूमर का कैपेसिटी कितना है पेमेंट करने का, that is called as a price support, and purchases any excess production at offered on the market। So accordingly the minimum price will be decided by the government and government at which consumer can afford।
कंज्यूमर को अफोर्ड होगा, यानी वो रीजनल प्राइसेस से वो परचेस करेगा। एक्सेस जितना भी प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट क्या करेगा, हायर प्राइस से परचेस करेगा। The government purchases which are difference between quantity supplied and quantity demanded. Supply कितना है और डिमांड कितना है, एक्स्ट्रा यूनिट्स will be purchased by the government at higher prices. क्योंकि उसको क्या किया हम लोगों ने, बेस रेट डिसाइड करके दिया है, इतना ही रेट से आपको सेल आउट करना है मार्केट में, और बचा हुआ अमाउंट हम लोग हायर प्राइसेस से परचेस करेंगे एंड देन वी विल सेल एट लोअर प्राइसेस टू द मार्केट। यानी एक्सेस प्रोडक्शन विल बी परचेस बाय द गवर्नमेंट एट हायर प्राइसेस। तो इसको बोलते हैं प्राइस सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज द ड्यूअल प्राइस। अभी जस्ट लुक टुवर्ड्स द ड्यूअल प्राइसिंग क्या है। Just go through this slide, then we will explain. These are the economic concept, not that much difficult. Yes, read this slide. Yes, see here. ड्यूअल यानी ड्यूअल यानी दो प्राइसेस, हम लोग दो लेवल ऑफ प्राइसेस डिसाइड करेंगे। गेटिंग दिस? अभी ड्यूअल प्राइसेस यानी क्या है, एज अ मैन्युफैक्चरर आई विल सेट टू डिफरेंट प्राइसेस फॉर टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। जिसका इनकम कितना है, जिसका पेमेंट करने का कैपेसिटी कितना है, अकॉर्डिंगली आई विल चार्ज द प्राइस। सो अंडर द सेम मार्केट फॉर डिफरेंट कस्टमर, एक ही मार्केट है, एक ही प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन भी सेम है, लेकिन कंज्यूमर मेरा डिफरेंट है, उसके इनकम अलग अलग। तो अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग इनकम जो है, उन्हीं लोगों के लिए अलग अलग प्राइस सेट करना, दैट इज नथिंग बट ड्यूअल प्राइसेस। गेटिंग दिस? So dual pricing is the pricing practice of setting different price in the different markets at the same product and services. मेरा प्रोडक्ट के फीचर्स सर्विसेज चेंज नहीं होगा, लेकिन अलग अलग रीजन पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्राइसेस हम लोग सेट करेंगे, उसको बोलते हैं ड्यूअल प्राइसेस। सो ड्यूअल प्राइसेस में व्हाट विल बी हैपन, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। those people who are staying near Hinjawadi, who are the IT people whose income is more, वहां का जो डिमांड है उसके रेट देखो, और द अनदर लोकेशन डिमांड का, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अंबेगांव एरिया, उधर के डिमांड के प्राइसेस और हिंजवड़ी के डिमांड के प्राइसेस देखो। सो दीज आर नॉट सिमिलर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ के रेट्स कुछ अलग है, तो हर एक प्रोडक्ट का देखो, और इंजवड़ी का जो डिमांड है उधर के प्राइसेस देखिए। और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नांदेड़ सिटी डिमांड एंड अंबेगांव डिमांड, और you can check the differences between values of the products at the demand at Nanded city and for example Satara road, अलग अलग ही आपको दिखे, क्योंकि as per the capacity, as per the income of the people, we will charge the prices. Okay, so product is the same, consumers are different, income level is different, so accordingly we will set the prices.
So at the time of setting the prices, what we will do, we will adjust our profit margin. जहां पे possible है ज्यादा कमाना, वहां पे हम लोग ज्यादा कमाएंगे. जहां पे हम लोगों को लगता है कि प्राइसेस बढ़ाने के बाद मेरा डिमांड कम हो जाएगा, मेरा सेल कम हो जाएगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रीजनेबल प्राइसेस रखेंगे. तो दैट इज समथिंग अबाउट ड्यूअल प्राइसेस. क्लियर एवरीबॉडी? अभी उसमें बताने वाला कुछ नहीं है. ड्यूअल प्राइसेस से ये कंसेप्ट है जहां पे जिस एरिया का इनकम जहां ज्यादा है, जिस लोगों का इनकम ज्यादा है, उनसे ज्यादा रिकवरी करना, उनको ज्यादा प्राइस अप्लाई करना. और जहां जिस एरिया का इनकम कैपेसिटी रिजनेबल है, कम है, वहां पे उसी टाइप के प्राइसेस अप्लाई करना. प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, द लोकेशन इज चेंजिंग, इनकम इज चेंजिंग. So as per the location and the income of the people, we are charging different prices at different market. Clear everybody? Dual prices क्या है? Yes, sir. हाँ. Now importance of the dual prices. The dual price system works by the charging higher prices to those customer with greater income or purchasing power. जिसका इनकम ज्यादा है, जिसका परचेसिंग प्राइसेस ज्यादा है, उससे ज्यादा प्राइस लगाए. और जिसका इनकम कम है, जिसको अफोर्डेबल नहीं होता है, उनको हम लोग क्या करेंगे, कम प्राइसेस चार्ज करेंगे. On the similar product is not different. The dual pricing strategy ensures that each group of consumer sees the value. जितना पैसा वो पे करेगा, उतना उसको बेनिफिट मिल रहा है ऐसा लगना चाहिए. Getting this? So for example, the person who is having good income, they will not ask for any kind of discounts. They don't make the negotiation as well. जितना भी prices जिससे हम लोग बोलेंगे उतना देके जाएगा, because they feel the value in that. Getting this? And जहां पे हम लोग मेरे प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर रहे हैं, उन्हीं को जो प्रोडक्ट मेरा अल्टीमेट कंज्यूमर जो प्रोडक्ट लेने वाला है, उसको लगना चाहिए कि प्राइस इज द रीजनेबल. तो जिसका इनकम ज्यादा है, उससे ज्यादा चार्ज किया तो भी उसको रीजनेबल प्राइस लगेगी. अगर जिसका कम रहेगा, उसको क्या रहेगी, अगर प्राइस कम चार्ज किया तभी उसको रीजनेबल प्राइस लगेगी. एनी हाउ, आई विल नॉट ब्रेक माई कस्टमर्स, आई विल नॉट लूज माई कस्टमर. सो टू have relationship with my customer, I need to adjust my prices at various levels, and that is nothing but dual price. Okay, understood this dual price concept? Yes. Yes or no? I think all these students are not listening. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us stop here. Next lecture we will go for the differentiated pricing and discriminating pricing. अभी ये this is also part of dual prices. अभी time तो हो गया है. I have to go to my college as well. So to the next lecture we will see remaining part of this, and to the next lecture we will finish 4th unit and we will start with 5th unit, last unit. 4th unit was the too much big. अभी लास्ट यूनिट जो है, इट विल रिक्वायर ओनली 3 to 4 लेक्चर्स फॉर द लास्ट यूनिट. छोटा यूनिट है, एंड वी विल फिनिश आवर सिलेबस इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच. Hello, यस, sir. In which college do you teach? आई एम इन DY Patil. Oh, nice. Sir, are you coming tomorrow? Where? In Matrix School of Management. Tomorrow No. is an event for. No? Okay. For what purpose? Sir, you have not received any invitation? No. Sir, it's in our mail or in our WhatsApp group. No, I am not in any WhatsApp group of your college. Okay, sir. Okay. Is there any function? Yes, sir. On the occasion of Women's Day. Okay. I will be not part. Okay, sir. Okay, so we'll just meet online. Yes, sir. Sure. You enjoy and all the best for your programs. Yes, sir. Thank you. Yeah.